Assalamualaikum students. Hope you all will be fine. Today our topic is measures of central tendency. Sometimes the volume of data is large and it is difficult to compare, understand and analyze. Then there is need to make that data comparable to avoidable difficulty and complexity. The measure of central tendency are concept of average, mean, mode and median. So firstly we learn about mean, which is also called average. Let we have x1, x2 and so on values be n given quantities, then their average is the value presenting the tendency of these quantities and is called their mean value or mean. It can be calculated by the formula. Formula is x bar, which is called mean, equals to x1 plus x2 plus x3 and so on, divided by the number of the quantities. So sum of the values divided by a number of the values. For example, the scores of students in 8 papers are 58, 72, 65, 85, 94, 78, 87, 85. So we add the values and divided the number of the values, which are 8. We get 78. So the mean is 78. The next is median. Median, if a data is arranged in ascending or descending order, the median of the data is the middle value of the data if it is consist of odd numbers of values. अगर हमारे पास odd number में values होंगी तो हमारे पास जो middle value आएगी वो median होगी. The mean of the two middle values of the data is the median of the data if the number of values in our data is even. और अगर हमारे पास वैल्यूज़ इवन नंबर में होंगी तो हम मिडल वाली दो वैल्यूज़ जो है वो यूज़ करेंगे फॉर फाइंड द मीडियन. फॉर एग्जांपल वी हैव अ वैल्यू द वेट इन kg ऑफ 9 स्टूडेंट्स. 9 इज़ अ odd number, so we make pair from both side and the middle value is 33, so the median is 33. Topic we have mode. Mode is a value that occurs most frequently in a data. In case of no value is Fitted in the data, then the data has no mode. If two or more values occur with the same greatest frequency, then each as a mode. मोड मीन्स कि हमारे पास जो गिवन डाटा है अगर उसमें हमारे पास रिपीट वैल्यू एक से ज़्यादा बार जो आएगी वो मोड कहलाएगी, और वो एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव नंबर्स 1, 2, 5, 7, 8, 2, 2, 4, 3, 5, 7. यहाँ पर बार बार आने वाली जो हमारे पास वैल्यू है वो 2 है, सो इसका मोड 2 होगा. Exercise 12.2, question number 1. Compute the mean, median and mode of the following data. Now we start exercise 12.2, question number 1, fourth part. Firstly, see the data which is ungrouped data. We have two types of data, group data and ungrouped data. Group data is the data when we have classes or groups, and ungrouped data is in unarranged form. So this data is unarranged form and not in groups, so this is ungrouped data. For ungrouped data we find the mean. Firstly we arrange the values in ascending order, then by using formula we find mean. दो तरह का डाटा सवाल में हमारे पास मौजूद होता है.
ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में हमारे पास ग्रुप्स या क्लास की सूरत में वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पर सवाल में हमारे पास लेटर्स हैं 2 से 5 तक लेटर, देन 6 से 8 तक दिए गए लेटर। अगर हमारे पास ग्रुप या क्लास की फॉर्म में डाटा होगा उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं, और जो अनअरेंज्ड फॉर्म में हो वो अनग्रुप डाटा कहलाएगा। फॉर फाइंडिंग द मीन we use formula which is mean equals to summation x divided by n. Summation x means we have a values, these values called x divided by n, which are the number of the values. So we add the values and divided by the number of values which is 20, we get 3.15. मीन को मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन है। समेशन मतलब हमने इन तमाम वैल्यूज़ का सम निकालना है और इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ गिवन है वो 20 है। सो इसको हम समेशन को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मीन कहलाएगा, विच इज़ 3.15. Next, mode. The value 3 is repeated the most, so 3 is mode. इस सवाल में ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू हमारे पास 3 है, इस वजह से मोड जो है वो 3 होगा। मीडियन वी हैव इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ विच इज़ 20। तो इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के लिए हम पहले वैल्यूज़ काउंट करेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ 20 हैं। 20 में से हमने 2 वैल्यूज़ को निकाल कर हमारे पास 18 बाकी रहेगा। मीडियन फाइंड करने के लिए 18 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 9 आएगा। हमने स्टार्ट से 9 वैल्यूज़ को स्किप कर देना है और लास्ट से 9 वैल्यू को स्किप करके हमारे पास सेंटर में जो वैल्यूज़ रह जाएंगी उनका हमने मीडियन फाइंड करना है। सपोज़ वी लेफ्ट 9 वैल्यू फ्रॉम स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and then from last 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we have 2 values which are in the middle, which is 3 and 3. We add the values and divided by the numbers, because we have 2 numbers, so divided by 2. 3 plus 3 divided by 2, which is 6 divided by 2, we get 3. It means that the median is 3. So the mean is 3.15, median is 3, and mode is also 3. The next question, we have values 99, 106, 101, 103, 108 and so on. Firstly, we arrange the values in ascending order. Then according to the formula, we add the values and divided by the number of the values, which are 9. We get 105. So the mean is 105. Next is median. For the median, we arranged the values, and then the middle value is 106 because the values are in odd number and values are 9. Even number है which is 9. 9 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। इट मीन्स हमने 4 वैल्यूज़ को एक साइड पर स्किप करना है और 4 को दूसरी साइड पे स्किप करना है, और जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। सपोज 1 2 3 4 वी skip the start values, and then from last 1 2 3 4 we get 106, and 106 is a median. So mode is 106, 107 and 108 because these 3 values are repeated 3 times. So तीनों वैल्यू हमारे पास मोड होंगी क्योंकि तीनों वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं. So the mean is 105, median is 106 and mode is 106, 7 and 8. In the next question we have values 5, 9, 8 and so on. Firstly we arrange the values in ascending order. Then for finding the mean we add all the values and divided by the number of values, which is 15. We get 7.266. By rounding we get 7.2.
7. For median, we have also arrange the value and then count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we have odd number. So the middle value is 7. So median is 7. Mode is most repeated value. Most repeated value is 7 and 8 in this question. So the mode is 7 and 8. So mean is 7.27, median is 7 and mode is 7 and 8. Next question we have 78, 215, 35 and so on. Firstly we arrange the value in ascending order and then we sum up all the values and divided the number of values which are 10. So we get mean which is 174. Next we find median. Firstly we arrange data in ascending order. We have 10 values. We subtract 2 values from 10 and remaining 8 values we divide 8 by 2. We get 4. So we left 4 values from start and 4 values from the last. Then we get 2 middle values. Including 2 middle values, the total values becomes 10. Suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. First 4 values 1, 2, 3, 4. And then last 4, 1, 2, 3, 4. We get 2 middle values which are 78 plus 215 divided by 2. We get 146.5 which is median. अगर हमारे पास इवन नंबर की फॉर्म में वैल्यूज़ मौजूद होंगी, इवन नंबर टोटल हमारे पास इस क्वेश्चन में 10 हैं, 10 में से 2 हम माइनस करेंगे जो कि हमारी एज अ मिडल वैल्यू बाद में यूज़ होंगी. बाकी 8 वैल्यूज़ को हाफ़ करके स्टार्ट से वो हाफ़ काउंट करेंगे और हाफ़ लास्ट से, जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तो जो मिडल वैल्यू हमारे पास 2 आई वो 78 और 215. Next mode. In this question we have no value repeated, so it has no mode. Hence the mean is 174. Median is 146.5 and there is no mode. Next question we have values 4125, 2500, 3100, 115 and so on. Firstly we arrange the values in ascending order. For finding the mean we add the values and divide it by the 10 because the number of the values are 10. And median we have 10 values which are even number, so we subtract 2 middle values and then we get 8. We left 4 values from the start, 1, 2, 3, 4 and 4 values from the last, 1, 2, 3, 4. So we get 3750 and 4125. We add both values and divide it by 2. We get 3937.5 which is median. Mode is 2500 because 2500 is repeated. So mean is 4344, median is 3937.5 and mode is 2500. Next question we have the distance in kilometer were traveled by 40 students to reach their school. So we have 2, 8, 1, 5, 9 and so on. Compute the mean, median and mode. So for finding the median, mean and mode, firstly we arrange the value in ascending order and then for finding the mean we use formula which is mean equals to summation x by n. So summation x means we add all of the values and then divided by the number of the values which is 40. So we divide 472
2 divided by 40 and get 11.8, which is mean. Next is median. For median we also arrange the values, and because the numbers are 40 which are even number हमारे पास है, इसमें से हम दो मिडल वैल्यूज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास 38 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 19 आएगा। इसका मतलब ये कि हमने 19 वैल्यूज़ स्टार्ट में लेफ्ट करनी है और 19 वैल्यूज़ ही लास्ट से स्किप करनी है। तो हमारे पास जो मिडल वैल्यूज़ आएंगी उनको हम फिर ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. It means we skip the first line and from the last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. So we have these two values in the middle, which is 10 and 10. So we add 10 plus 10 divided by 2. We get 10. So median is 10. और ये हमारे पास कौन सी टर्म होगी? 20th और 21st टर्म होगी। यहाँ तक 19 थी, ये 20th टर्म और ये 21st टर्म, दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 10. सो द मीडियन इज 10. Next, in the mode, we take most repeated value. So we have the value 1, 5 and 10 are repeated the most. And 4 times, so 1, 5 and 10 are mode. So the mean is 11.8, median is 10 and mode is 1, 5 and 10. Okay students, Allah Hafiz.